with more than 25 crore workers from key government sectors gearing up to protest against what they call the centre's anti-worker, anti-farmer and pro-corporate policies. Bharat Bandh has been called by a joint platform of 10 central trade unions with support from farmer organizations and rural worker groups. Major disruptions are expected across essential public services, including banking, postal operations, transport and power supply. The Bengal Provincial Bank Employees Association, affiliated with the All India Bank Employees Association, confirmed that both the banking and insurance sectors will participate in the strike. Electricity supply may also be impacted. Over 27 lakh power sector workers are expected to join the strike. No official holiday has been declared by the government. However, since many government staff, particularly in PSUs, coal, power and postal services, are taking part in the strike, office work may be slower and administrative tasks could be delayed. India and Brazil have signed several agreements, including on combating international terrorism and transnational organized crime during Prime Minister Modi's state visit to the South American country, the Ministry of External Affairs said on Tuesday. A memorandum of understanding on cooperation in renewable energy and another MOU on cooperation for the sharing of successful large-scale digital solutions for digital transformation were also inked, said MEA Secretary East P. Kumaran, addressing a special press briefing on PM Modi's state visit to Brazil. When asked about detailed information regarding the agreement on combating international terrorism, Kumaran said the agreement essentially deals with the exchange of information for the transfer of persons and criminals, etc. We have other legal frameworks such as the extradition treaty, mutual legal assistance treaties, etc. This is for real-time or near real-time intelligence cooperation so that one can try and deal with counter-terrorism and transnational organized crime more effectively. MEA Secretary East Kumaran said that India and Brazil will sign 3 more agreements, which include an MOU on agricultural research between the concerned bodies of both nations and an MOU for cooperation in the intellectual property sector. The agreements were signed after PM Modi held a restricted meeting followed by delegation-level talks with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva at the Alvorada Palace in Brasilia on Tuesday. MEA Secretary said that PM Modi during the meeting thanked President Lula for condemning the April 22nd Pahalgam attack, which claimed the lives of 26 people and injured several others, and extending solidarity with the people of India. After meeting with President Lula, PM Modi emphasized that the two nations shared a common approach to fighting terrorism, zero tolerance and zero double standards. PM Modi stated that he and President Lula strongly oppose terrorism and those who support it. JCM will serve as a key platform to review and advance cooperation in priority areas of mutual interest. Recognizing India's growing global economic role, President Peña expressed keen interest in attracting Indian investments to Paraguay. He engaged with prominent Indian business leaders in Delhi. He is scheduled to travel tomorrow to Mumbai and interact with top Indian business leaders and companies. The Indian side would be looking to collaborate with Paraguayan counterparts in a number of areas, including health and pharmaceuticals, defense, infrastructure, agriculture, renewable energy, and mining. In Mumbai, the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister of Maharashtra are expected to call on the President of Paraguay. Trade is an important pillar of our relationship with Paraguay. Both sides wish to strengthen and expand existing trade links under the India-Mercosur Preferential Trade Agreement. We will explore holding technical talks on the India-Mercosur PTA to enhance market access and boost bilateral and inter-regional trade. The two sides also agreed to strengthen cooperation in the space sector, including collaboration in launch services, space applications, satellite manufacturing, and capacity building between the respective space ecosystems. Dear friends, as you know, agriculture is one of the most important sectors for both the economies. Recognizing its importance, we both have agreed to work out an institutional mechanism under a memorandum of understanding aimed at strengthening collaboration in mutually beneficial areas of agriculture and animal farming. We also discussed enhancing cooperation in higher education and exploring collaboration in areas such as curriculum development,
teacher capacity building, infrastructure support, and digital education initiatives tailored to Paraguay's interests. India's strength in traditional medicine is well known. Both countries agreed to cooperate in promoting integrative traditional medicine, homeopathy, and yoga. We also agreed to work towards official recognition of Ayurvedic Pharmacopoeia of India and the Indian Pharmacopoeia in Paraguay. Let me also share with you the cooperation we have in renewable energy, India's role in Paraguay through the International Solar Alliance, particularly NTPC's work as project management consultant for the 500 megawatt solar park project since 2021 remains significant. Paraguay is a founding member of the Global Biofuel Alliance. Both sides worked to collaborate on biofuels and green hydrogen across the entire value chain, including joint projects, technology transfer, and standards harmonization. India also offered technical consultancy services to Paraguay in the oil and gas sector for mutual benefit. Ahead of the upcoming Kanwar Yatra 2025, Assistant Commissioner of Police Ajay Pal Sharma stated that there would be 3 super zones and 7 zones for the smooth movement of traffic in the city. He further stated that coordination was being established with other districts to ensure no one faces any inconveniences. The UP administration has also launched QR codes to enhance transparency and accountability at food stalls and dhabas on the Kanwar route. The meeting was attended by the UP Director General of Police, Chief Secretary and top officers from both states to coordinate efforts for smooth and secure conduct of the pilgrimage. आगामी कांवड़ के जो संबंध में जो कि श्रावण मास में 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें हमने अपने जो जनपद का क्षेत्रफल है उसको 3 सुपर जोन्स में और उसके बाद 7 जोन्स और आगे सेक्टर्स में बांटा है। इसमें जो सुपर जोन्स के प्रभारी हैं हमारे, वो एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी रहेंगे। उसके बाद जोन्स में हमारे एसीपीज प्रभारी रहेंगे और फिर आगे थाना वाइज हमने सेक्टर्स में अलग अलग में बांटा है। इसमें कुल 292 किलोमीटर का जो रोडवेज है, जो हमारा स्ट्रेच रहेगा, इसमें विभिन्न घाटों से विभिन्न मंदिरों और जौनपुर का मार्ग और गुरुपुर की तरफ जो हमारा मार्ग पड़ता है, इसी तरह फाफामऊ क्षेत्र की तरफ और इसी तरह जो बनारस रूट है, इन सभी मार्गों पे हमारा कांवड़ का मूवमेंट रहेगा। तो इस संबंध में जो यातायात की मूवमेंट है, जो हमारे नो एंट्री पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ जो ट्रैफिक के डाइवर्जन रहेंगे और जो कांवड़ रूट रहेंगे, वहाँ पे सुरक्षा के संबंध में ये सभी जो है इसको पूरी तरह से फुलप्रूफ तरीके से प्लान कर लिया गया है। इसमें जो कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी और इसके साथ ही किसी भी यात्री को, किसी भी ट्रैवल करने वाले को असुविधा ना हो, उसके लिए ट्रैफिक रूट को प्लान किया गया है, जिसके संबंध में डीसीपी ट्रैफिक इसके नोडल अधिकारी हैं। इसके साथ ही अन्य जो जनपद हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित करते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक के डाइवर्जन्स हैं, जनपद के जो विभिन्न मार्ग हैं अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए, उनको प्लान किया गया है। और इसके साथ ही जो हमारा ऑन वेज जो अलग अलग चीज़ों का प्लेसमेंट है, जो हमारे संसाधनों का, जैसे कि क्रेन्स का, हमारे ड्रोन्स का, हमारे सीसीटीवीज का, एम्बुलेंसेज का, इसके संबंध में हमारी इंट्रा डिपार्टमेंटल एज वेल एज इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग कर ली गई है और अभी जो नेबरिंग हमारे बॉर्डरिंग जनपद हैं उनके साथ में भी मीटिंग आयोजित करके इस चीज़ को बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो विभिन्न घाट हैं जहां से लोगों के द्वारा जो कांवड़ के लिए जल लिया जाएगा, वहां पे घाटों की सुरक्षा हेतु प्लान तैयार किया गया है। इसमें वहां पे रोशनी की व्यवस्था हेतु, वहां पे अनाउंसमेंट्स की व्यवस्था हेतु, जो हमारे जल पुलिस है उनकी व्यवस्था, उनका व्यवस्थापन, इसी तरह से जो और जो गोताखोर हैं उनकी सहायता लेने हेतु पूरी तरह का आयोजन तैयार की गई है और पूर्ण रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कांवड़ यात्रा का आयोजन जनपद में कराया जाएगा। विशेष तौर से शिवालयों पर भी नजर रखी जा रही है। जितने भी हमारे जनपद में शिवालय हैं, क्योंकि कांवड़ के दृष्टिकोण से शंकर जी शिवलिंग पे जल लोग अर्पित करते हैं श्रद्धा से, तो वहाँ पे जो महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्लान कार्य योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही जो हमारी एंटी रोमिंग स्क्वाड्स की टीम्स हैं वो लगातार जनपद में भ्रमणशील सक्रिय रहेंगी और सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे कर्मचारीगण को
अलग अलग टीमें बना करके डिप्लॉय किया गया है। जो भी शिवालय हैं उनकी सुरक्षा हेतु, शिवालय को जाने आने वाले मार्गों पर सुरक्षा हेतु ये पूरी तरह से बंदोबस्त किए गए। Following the violent protests at Kerala University, a case has been registered against 27 activists of the ruling CPM Student Federation of India, including its State Secretary P.S. Sanjeev, who has been named the prime accused. Police said that the case also names 1,000 identifiable protesters who have been accused of damaging public property, forcibly entering the university campus, and assaulting police and university staff. The police have also invoked non-bailable charges under the Bharatiya Nyaya Sanhita, Kerala Police Act, and the Prevention of Damage to Public Property Act. The police detained the protesting activists. The protest, which was against Governor Rajendra Arlekar, saw SFI activists break open the university gate and clash with the police. The activists had entered the premises of Kerala University, alleging the saffronization of universities. The police tried to bring the situation under control as the students entered the university premises. The visual showed police officials with protective gear detaining the SFI activists while the protesters were seen sloganeering. Communist Party of India MLA M.V. Govindan also arrived at the university campus. The row began when SFI opposed the use of picture of Bharat Mata in an event at Kerala University. The protesters were also agitated regarding the suspension of Vice Chancellor Mohanan Kunnumal. On July 2nd, the governor appointed Caesar Thomas, Vice Chancellor of Kerala Digital University, as the Vice Chancellor in charge of the University of Kerala. Prime Minister Modi on Tuesday departed for Namibia after concluding his two-day visit to Brazil, where he attended the 17th BRICS Summit in Rio de Janeiro and held bilateral talks with President Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilia. PM Modi is traveling to Namibia for a state visit at the invitation of President Netumbo Nandi Ndaitwah. It will be PM Modi's first visit to Namibia and the third ever prime ministerial visit from India to Namibia. PM Modi was on a state visit to Brazil at the invitation of Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. During his visit, PM Modi held a meeting with President Lula and attended the BRICS Summit in Rio de Janeiro. PM Modi also held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines of the BRICS Summit. PM Modi thanked President Lula and the people of Brazil for their kindness throughout the visit. PM Modi called the BRICS Summit a splendid opportunity to discuss issues impacting the planet and the importance of the Global South in the global high table. Prime Minister Modi and Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva held a meeting at the Alvorada Palace on Tuesday. During the meeting, the leaders discussed ways to deepen trade ties and diversify trade. The death toll from the ongoing monsoon fury in Himachal Pradesh has risen to 85, with 54 people losing their lives due to rain-triggered disasters like landslides, cloudbursts, flash floods and drowning incidents, while 31 people have died in road accidents, said State Disaster Management Authority on Tuesday. According to the State Disaster Management Authority's latest cumulative report, since June 20th, 2025, when monsoon officially set in, the state has witnessed widespread damage to live property, livestock and infrastructure. The highlighted that the total monetary damage to public and private property has exceeded Rs 718 crore. A total of 129 people have been injured, 340 homes fully destroyed and 10,255 animals and poultry lost across the state. Mentioned the report. Mandi district remains the worst hit, with 17 rain-related fatalities and extensive infrastructure loss, including 247 damaged homes, 149 cowsheds and the deaths of 225 livestock. An evening status report issued on Tuesday mentioned that 198 roads are currently blocked, 159 electricity distribution transformers are out of service and 297 water supply schemes are disrupted. With the annual Kanwar Yatra set to begin on July 11th, district and police authorities have stepped up preparations to ensure the safety, convenience and smooth movement of Kanwarias. Assistant Commissioner of Police Ajay Pal Sharma stated the area has been divided into 3 super zones and 7 zones, further broken into multiple sectors to streamline management. Their top priority is the safety of Kanwarias and ensuring their hassle-free movement. Traffic routes have been carefully planned to avoid inconvenience, and coordination with neighboring districts is ongoing.
Meanwhile, District Magistrate Ravindra Kumar Mandar also briefed the media on the extensive administrative measures being taken. Senior Congress leader and former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan has strongly criticized the state government's handling of the three-language formula and the recent protests linked to the language issue. Speaking to the media, Chavan said the state government tried to implement the three-language formula, but the people of Maharashtra started protesting against it. The government had to withdraw its decision. Now some people want to celebrate it and take credit for it. Expressing concern over growing intolerance, Chavan condemned instances of violence in the name of language. Holding the state's leadership accountable, he added, the CM is responsible for this because for political gains, he is supporting the protests of some people while denying permission to others. ये मुद्दा पॉलिटिकली खींचा जा रहा है। सरकार ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, महाराष्ट्र की जनता ने बड़े पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदी की पहली कक्षा से अनिवार्य करने के खिलाफ है कि आप धीरे धीरे उसको हिंदी को इंट्रोड्यूस करिए, लेकिन पहले मातृभाषा मराठी और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, जो कि एक नॉलेज देने वाली भाषा है, उसको रखिए पहले से और हिंदी को बाद में रेकमेंड कीजिए। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस की जो माइंडसेट है दिल्ली का, कि उनका यही है कि बस एक देश एक मजहब, एक देश एक भाषा, एक देश एक कर पद्धति, एक देश एक इलेक्शन, वो सब एक 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 के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके चलते जब हिंदी का इम्पोजिशन होने के आसार दिखे तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो आरएसएस का एजेंडा सरकार चला रही है, जिसके खिलाफ काफी जोरों से प्रोटेस्ट हुआ। सरकार को निर्णय पीछे लेना पड़ा, जीआर को रद्द करना पड़ा, जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था। तो बस बात खत्म हो गई। महाराष्ट्र की जनता की बात सरकार ने मान ली, जो प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था। अब कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हमारी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, अगर वो कहना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें हर एक मराठी आदमी इस इम्पोजिशन के खिलाफ था। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने फैसला बदल दिया है, महाराष्ट्र की जनता की मान ली है, तो इशू खत्म हो गया है। अब किसी को सेलिब्रेट करना अवश्य करें, और कोई साथ आता है तो भी कोई बात नहीं, पॉलिटिकल अलाइनमेंट तो होते रहते हैं। लेकिन मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं। आपने आज देखा कि एक मीरा भाईंदर में एक सरकार का मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत सी कर रहा है। किस बलबूते पे कर रहा है? क्योंकि वो एक शिंदे ग्रुप का मंत्री है और उसका नेता शिंदे उनको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की छवि इसमें खराब हो रही है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई कानून अपने हाथ में लेकर जो अल्पसंख्यक अल्पभाषिक है, दूसरी भाषा बोलने वाले जिनकी मातृभाषा मराठी नहीं है, उनकी पिटाई कर दे। ये संभव नहीं है। हाँ, हम जरूर अपेक्षा करेंगे, बिल्कुल करबद्ध निवेदन करेंगे, जो भी बाहर के राज्यों से यहाँ काम करेंगे, आप मराठी सीखिए। अगर आपको महाराष्ट्र में काम करना है, महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी है, तो मराठी सीखिए। आप कम से कम काम चलाओ मराठी तो सीखिए, लेकिन उसके लिए जबरदस्ती करना ये स्वीकार नहीं है। और ये फिर से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का अपयश है कि या तो वो जानबूझ के उसको भड़का रहे हैं ताकि पॉलिटिकल फायदा मिले, या उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की एक बाहर जो इमेज आ रही है कि एक परोकियल स्टेट है, ये बिल्कुल एक एनलाइटेड स्टेट नहीं है, जो कि वास्तव से दूर है। कहीं ना कहीं वी आर
Men who killed a well-known businessman in Punjab's Abohar town Monday was shot dead in an encounter while in custody on Tuesday. Police said detainees Jasprit Singh and Ram Ratan were taken to a wooded area for recovery of the pistols used in the murder, where they turned a gun on the escort party and were killed in retaliatory firing. Constable Maninder Singh was shot in the shoulder and has been admitted to a hospital. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਬੋਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਟੋਟਲੇ 5 ਜਾਣੇ ਸੀ, 3 ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ, 2 ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਅਪ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਤਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਮਜੀਦ। ਸੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੜਾਸੇ ਬੰਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੀਰ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਔਰ 2554 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.